Hello and welcome. So we'll begin with a short meditation. Sit back comfortably. Withdraw your attention from the outside world and bring it to yourself. Allow yourself to settle in, letting go of any tension or stress. Now bring your attention to your heart. Notice how you feel in this moment. Are there any areas of unhappiness or discomfort? Allow yourself to acknowledge these feelings, but don't identify with them. Remember that you are not your emotions. You are the awareness that observes them. As you inhale, repeat the phrase, I am free, to yourself. Imagine any unhappiness or discontentment dissolving with each breath. Envision yourself standing in a warm golden light that represents freedom and joy. As you rest in this peaceful state, remember that freedom from unhappiness is always available to you. It's a choice you can make in every moment. Okay, thank you so much. So we'll begin with today's session. I'll just share the screen with you. Okay. So today we're going to begin with dissolving ordinary unconsciousness. So the seeker is asking, so how can we be free from this affliction? So affliction का मतलब है from this suffering, जो the suffering of being unconscious and the suffering that is being caused to the whole planet because of this unconsciousness. So the author is saying, but make it conscious. तो कैसे हम इस suffering से बच सकते हैं by being conscious ourselves. Okay. Observe the many ways in which unease, discontent, and tension arise within you through unnecessary judgment, resistance to what is, and denial of the now. तो हमें अपने आप को ऑब्जर्व करना है कि हम कितनी बार जो भी सिचुएशन है उससे हम उसको हम रेजिस्ट करते हैं, हम जजमेंट्स हमारे अंदर आती हैं हमारे थॉट्स में. तो वी नीड टू स्टार्ट ऑब्जर्विंग आवरसेल्फ.
observing our thoughts, our emotions. Anything unconscious dissolves when you shine the light of consciousness on it. Underline. जो भी हमारे अंदर, जो अनकॉन्शियसनेस है, जो जो थॉट्स है, जो चलते रहते हैं, फॉर नो रीजन, व्हेन वी शाइन द लाइट ऑफ आवर कॉन्शियसनेस, मतलब जब हमारी सोल पावर बढ़ती है, when we become more soul conscious, when we understand, when we become more aware that, I'm not these thoughts, not these emotions, I'm not this, this mind. That's when the unconsciousness dissolves. उसके लिए क्या करना है? हमें अपनी सोल पावर को बढ़ाना है. हमें, अपने थॉट्स को देखना है एज अ डिटैच्ड ऑब्जर्वर. जितना जितना हम उस पावर को बढ़ाते रहेंगे, अनकॉन्शियसनेस डिसॉल्व होती रहेगी. Once you know how to dissolve ordinary unconsciousness, the light of your presence will shine brightly, and it will be much easier to deal with deep unconsciousness whenever you feel its gravitational pull. तो जितना जितना हम ये प्रैक्टिस को बढ़ाते रहेंगे, जितना जितना हम अपने अवेयरनेस को बढ़ाते रहेंगे, हम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते रहेंगे, तो तब डीप अनकॉन्शियसनेस मीन्स जब बिल्कुल ईगोइक माइंड आइडेंटिफिकेशन जिसको कहते हैं ना, जब माइंड इट दिस एज इफ द माइंड हाईजैक्स यू, दैट इज व्हेन इट विल स्टार्ट हेल्पिंग अस. जब कोई extreme situation आ जाती है, when we continuously keep practicing being an observer, it will start helping us in extreme situations. However, ordinary unconsciousness may not be easy to detect initially because it is so normal. मतलब इनिशियली हमें पता ही नहीं चलता क्योंकि इतना हम यूज टू हो गए ना वो ओवर थिंकिंग से, वो थॉट प्रोसेस से. तो हमें ये पता ही नहीं चलता कि हम हमारा ये अनकॉन्शियस बिहेवियर है. Make it a habit to monitor your mental emotional state through self observation. Am I at ease at this moment is a good question to ask yourself frequently. Or you can ask, what's going on inside me at this moment? Be at least as interested in what goes on inside you as what happens outside. मतलब जितना हम इंटरेस्ट लेते हैं हमारी आउटसाइड वर्ल्ड में क्या हो रहा है, एक्सटर्नल क्या क्या चल रहा है, उतना ही हमें इंटरनली भी अपने आप को ऑब्जर्व करना है. हाउ एम आई फीलिंग एट दिस मोमेंट, इज देयर समथिंग दैट्स बॉदरिंग मी. ऐसे घड़ी घड़ी अपने आप से क्वेश्चंस पूछने हैं. If you get the inside right, the outside will fall into place. Underline, if you get the inside right. जब हमारा सब कुछ aligned होगा, हमारे thoughts, हमारे words, हमारे actions, that's when everything outside will fall into place. But usually हम क्या करते हैं? हम external situations पे ज्यादा ध्यान देते हैं. Primarily, reality is within. Second, reality without. But don't answer these questions immediately. Direct your attention inward. Have a look inside yourself. What kind of thoughts is your mind producing? What do you feel? Direct your attention into the body. Is there any tension? Once you detect that there is a low level of unease, the background static, see in what way you are avoiding, resisting, or denying life. So, in what way are we denying? By denying the now. There are many ways in which people unconsciously resist the present moment. I will give you a few examples. With practice, your power of self observation, of monitoring your inner state, will become sharpened. तो वही ऑथर समझा रहे हैं कि अगर हमें घड़ी घड़ी अपने इनर वर्ल्ड पे अटेंशन देनी है, अगर हमें लग रहा है कि किसी चीज से रेजिस्टेंस क्रिएट हो रही है, कुछ चल कुछ
है जिसको हम अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ है जो हमें अफेक्ट कर रहा है, तो वी नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, तो वही ऑथर एग्जाम्पल्स देके भी समझाएंगे, बिकॉज इट इज वी आर अनकॉन्शियसली रेजिस्टिंग द प्रेजेंट मोमेंट। और जितना जितना हम सेल्फ ऑब्जर्वेशन प्रैक्टिस करते जाएंगे, हमारी पावर हमारी इनर स्टेट बढ़ती जाएगी। फ्रीडम फ्रॉम अनहैप्पीनेस। Do you resent doing what you are doing? It may be your job, or you may have agreed to do something and are doing it, but part of you resents and resists it. Are you carrying unspoken resentment toward a person close to you? Do you realize that the energy you thus emanate is so harmful in its effects that you are in fact contaminating yourself as well as those around you? तो ये सब क्वेश्चंस हमें पूछने, क्या जो मैं कर रही हूँ उससे मैं खुश हूँ, कुछ रिजेंटमेंट तो नहीं है, कुछ अंदर से वो खालीपन तो नहीं लग रहा, वट एवर इट इज, रेजिस्टेंस तो नहीं आ रही, या किसी की तरफ कहीं वो किसी से बात नहीं हो रही, बट अंदर ही अंदर हमारे वो एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस चल रहा है, एक पैटर्न चल रहा है, हम बात करके एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। तो ये सब क्वेश्चंस हमें अपने आप से पूछने हैं, क्योंकि जितना ज्यादा हमारे अंदर ये नेगेटिविटी होएगी, इट इज नॉट जस्ट affecting us, it's also affecting the ones around us. Have a good look inside. Is there even the slightest trace of resentment, unwillingness? If there is, observe it on both the mental and the emotional levels. What thoughts is your mind creating around the situation? Then look at the emotion, which is the body's reaction to those thoughts. तो अगर हमें ये सब फीलिंग्स आ रही है किसी, या तो हमारी जॉब में हमें अच्छा नहीं लग रहा वहां पे, या किसी के साथ हम बात नहीं कर पा रहे, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, तो हमें ऑब्जर्व करना है कि माइंड में क्या थॉट्स चल रहे हैं, और क्या सेंसेशंस फील हो रही है बॉडी में, क्या इमोशंस फील कर रहे हैं हम। Does it feel pleasant or unpleasant? Is it an energy that you would actually choose to have inside you? Do you have a choice? Maybe you are being taken advantage of. Maybe the activity you're engaged in is tedious. Maybe someone close to you is dishonest, irritating, or unconscious. But all this is irrelevant. Whether your thoughts and emotions about the situation are justified or not makes no difference. The fact is that you are resisting what is. जो भी चल रहा है एक्सटर्नली, इट्स ऑल इररिलेवेंट। अगर हम कोई है जो डिसऑनेस्ट है, किसी के साथ हमारी बनती नहीं है, हमारा जॉब बहुत टायरिंग है, ये सब ऑल दीज थिंग्स आर इररिलेवेंट, बिकॉज क्या हमारे थॉट्स चल रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। ये पॉइंट है कि हम रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं इंटरनली, हमारे अंदर बहुत रेजिस्टेंस है किसी के तरफ, या where we are working over there. So resistance is what the problem is. You are making the present moment into an enemy. You are creating unhappiness, conflict between the inner and the outer. Your unhappiness is polluting not only your own inner being and those around you, but also the collective human psyche of which you are an inseparable part. So it is not just we think, whatever is going on inside me, it's just, affecting me, but ऐसा नहीं है। जैसा हम सोचते हैं, जो हम करते हैं, एक जैसे ऑथर के ना एक कलेक्टिव ह्यूमन साइकी हो जाता है, what is internally is what is externally as well। जो हमारे अंदर है वो ही हमारा बाहर भी is the same। तो उसके लिए वी हैव टू
be, very careful about what is going on inside us. The pollution of the planet is only an outward reflection of an inner psychic pollution. Millions of unconscious individuals not taking responsibility of their inner space. तो जो भी हमारे अंदर चलता है, अगर हमारे अंदर नेगेटिविटी है, रिजेंटमेंट है, एंगर है, वो ही हम बाहर भी एक्सप्रेस करते हैं, एंड इट्स नॉट जस्ट थ्रू वर्ड्स, इट्स थ्रू आवर वाइब्रेशंस एज वेल. तो उससे जो हमारे आसपास है वो अफेक्ट होते हैं. एंड फिर धीरे धीरे, it is affecting the whole planet, because there are millions of, people who are unconscious, जिनको awareness नहीं है about their thoughts, about expressing themselves. So it is not just affecting us. So we need to understand this, so that we need to take responsibility of our own uh, inner self, inner space, inner self. That's very important. Either stop doing what you are doing, speak to the person concerned, and express fully what you feel, or drop the negativity that your mind has created around the situation that serves no purpose whatsoever except to strengthen a false sense of self. या तो आप डील कर सकते हैं, या आपको लगता है कि आप बात करके कम्युनिकेट करके जो भी माइंड में प्रॉब्लम है वो आप सॉल्व कर सकते हैं, तो आप वो करो. अदरवाइज कई सिचुएशंस ऐसी होती है where you there is not much you can do, so you just have to drop the negativity, जैसे कहते हैं just surrender to the situation, and don't let all those negative thoughts and emotions build up on you. Recognizing its futility is important. Negativity is never the optimum way of dealing with any situation. In fact, in most cases, it keeps you stuck in it, blocking real change. Anything that is done with negative energy will become contaminated by it, and in time give rise to more pain, more unhappiness. मतलब जो अगर हमारे अंदर नेगेटिविटी होएगी, हम अगर उसी नेगेटिविटी से कम्युनिकेट करेंगे, तो इट विल जस्ट अल्टीमेटली इट विल गिव मोर पेन एंड अनहैप्पीनेस. तो पॉजिटिव होना बहुत इम्पोर्टेंट है इन एनी सिचुएशन, चाहे एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस जितने भी नेगेटिव हमें फील हो, हमें अपना पॉजिटिव सेल्फ ही आगे रखना. Furthermore, any negative inner state is contagious. Unhappiness spreads more easily than a physical disease. Underline. तो हमारे अंदर जो अगर हमें हमारे अंदर वो अनहैप्पीनेस डिसकंटेंटमेंट होएगी, तो बहुत ज्यादा जल्दी स्प्रेड करती है. यहाँ पे ऑथर्स कह रहे मोर देन अ फिजिकल डिजीज. Through the law of resonance, it triggers and feeds latent negativity in others unless they are immune, that is highly conscious. मतलब, the negativity in you will spread others unless, a person is highly conscious. अगर वो बहुत ज्यादा aware है अपने thought processes, अपने आसपास के vibration से अपने आप को protect करके रख रहे हैं, फिर उनको affect नहीं करेगी negativity. Are you polluting the world or cleaning up the mess? You are responsible for your inner space. Nobody else is, just as you are responsible for the planet. ये बहुत इम्पोर्टेंट है अंडरलाइन करके रिमेम्बर करना इस बात को, कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई इनर स्पेस. मेरे अंदर जो भी चल रहा है, किसी को मैं ब्लेम नहीं कर सकती कि ये क्यों ऐसा है, ये सिचुएशन क्यों ऐसी है. इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड जस्ट एज आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लानिट एज वेल, यू नो you, as within, so without. If humans clear inner pollution, then they will also cease to create outer pollution. जब
अंदर से हमारा साफ होगा, क्लीन होगा, अलाइंड होगा, that is what will vibrate to everybody, we meet in the planet, uh, through our thinking process. So it's very important that we remember that I am responsible for my inner space and for the planet as well. How can we drop negativity as you suggest? By dropping it. तो सीकर पूछ रहे हैं कि कैसे हम नेगेटिविटी को छोड़े, तो author is saying by actually dropping it, just by leaving it. How do you drop a piece of hot coal that you are holding in your hand? How do you drop some heavy and useless baggage that you are carrying? By recognizing that you don't want to suffer the pain or carry the burden anymore, and then letting go of it. वही जब हम कुछ हैवी कुछ उठाते हैं या कुछ गरम उठाते हैं, हम कैसे उसको छोड़ देते हैं क्योंकि हमें पता है कि ये गरम है, इट्स गोइंग टू कॉज सफरिंग एंड पेन, so we just leave it. In the same way, even negativity, we know, हमें पता है ये सब thoughts जो हम सोचते हैं, फील करते हैं, it's just going to create more suffering and pain. So we just have to start learning to drop it, to let it go, to uh, Taki, our soul power can shine through us. The light of the consciousness can come through. Deep unconsciousness, such as the pain body or other deep pain, such as the loss of a loved one, usually needs to be transmuted through acceptance combined with the light of your presence, your sustained attention. जब डीप अनकॉन्शियसनेस होती है, जब बिल्कुल ऐसे लगता है माइंड ने टेक ओवर कर दिया, या कुछ बहुत डीप पेन होता है, जैसे हमारे बहुत क्लोज किसी को वी लूज, तो दिस एंड इन दिस सिचुएशंस इट इज वेरी इम्पोर्टेंट कि हम एक्सेप्टेंस भी हमारे अंदर हो, और हमारा प्रेजेंस भी, अवेयरनेस हमारी जगी हुई हो, वी हैव दैट continuous attention on our thoughts, we have that constant awareness more, it should be shining even more during these situations. Many patterns in ordinary unconsciousness, on the other hand, can simply be dropped once you know that you don't want them and don't need them anymore. Once you realize that you have a choice, that you are not just a of bundle of conditioned reflexes. All this implies that you are able to access the power of now. Without it, you have no choice. जब भी ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस होती है जैसे कोई भी सिचुएशन होती है और हम रिएक्ट कर लेते हैं, एंड देन व्हेन वी स्टार्ट रियलाइजिंग दैट we have a choice. We can respond. We can, just pause and reflect. Ki what's going on in my mind, and how am I going to react in a particular situation. When we have start building up that awareness, start observing what's going on in our mind, then we'll be able to, जैसे author कह रहे हैं, access the power of now. And उसके अलावा there is no choice to get rid of, this negativity and unconsciousness. If you call some emotions negative, aren't you creating a mental polarity of good and bad, as you explained earlier? तो सीकर कह रहे हैं कि अगर हम कुछ पोर्शन इमोशंस को नेगेटिव बोलेंगे तो हम ये डिफरेंस नहीं क्रिएट कर रहे माइंड में. ऑथर कह रहे नो, द polarity was created at an earlier stage when your mind judged the present moment as bad. This judgment then created the negative emotion. But if you call some emotions negative, aren't you really saying that they shouldn't be there? That it's not okay to have those emotions? My understanding is that we should give ourselves permission to have whatever feelings come up rather than judge them as bad or say that we shouldn't have them.
It's okay to feel resentful. It's okay to be angry, irritated, moody, or whatever. Otherwise, we get into repression, inner conflict, or denial. Everything is okay as it is. Author कह रहे, of course, once a mind pattern, an emotion or a reaction is there, accept it. You were not conscious enough to have a choice in the matter. तो जो सीकर है वो कह रहे हैं कि ऐसे लेबल करना कि ये इमोशंस नेगेटिव है, उससे फिर एक जजमेंट क्रिएट होती है अपने ही माइंड में कि ये इमोशन आ रहा है, ये मैं क्यों फील कर रही हूँ, आई व्हाई एम आई फीलिंग रिजेंटफुल, क्यों मुझे गुस्सा आ रहा है, क्यों मैं इरिटेट हो रही हूँ। तो फिर ये इससे क्या होता है, फिर हमारे अंदर ही वो इनर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है कि ये इमोशंस क्यों आ रहे हैं। तो सीकर कहता है एवरीथिंग इज ओके एज इट इज। तो ऑथर ऑल्सो एक्सप्लेन्स कि अगर कुछ माइंड पैटर्न में चल रहा है, इट्स ओके, एक्सेप्ट इट। So we are not conscious enough to have a choice in that matter. That's not a judgment, just a fact. If you had a choice or realized that you do have a choice, would you choose suffering or joy, ease or unease, peace or conflict? Would you choose a thought or feeling that cuts you off from your natural state of well-being, the joy of life within? Any such feeling I call negative, which simply means bad. Not in the sense that you shouldn't have that, but just plain factual bad, like feeling sick in the stomach. तो author पूछ रहे कि if you had a choice, क्या आप choose करते suffering or joy? You तभी जब आपको ये पता ही नहीं था कि आप चूज कर सकते हैं, you can choose to be happy. That is what you actually are. You are full of love, you are full of happiness, bliss. How is it possible that humans killed in excess of 100 million fellow humans in the 20th century alone? Humans inflicting pain of such magnitude on one another is beyond anything you can imagine. And that's not taking into account the mental, emotional, and physical violence, the torture, pain, and cruelty they continue to inflict on each other, as well as on other sentient beings on a daily basis. मतलब वही ऑथर कह रहे हैं कि अनकॉन्शियसनेस है, तभी तो इतनी सफरिंग है, इतनी इतना ज्यादा फिजिकल वायलेंस, पेन है। व्हाई इज इट? बिकॉज देयर इज अनकॉन्शियसनेस, वो अवेयरनेस ही नहीं है ना। डू दे एक्ट इन दिस वे बिकॉज दे आर इन टच विद देयर नेचुरल स्टेट, द जॉय ऑफ लाइफ विद इन? ऑफ कोर्स नॉट। उनको पता ही नहीं है व्हाट देयर रियल सेल्फ एक्चुअली इज। पर ना ऐसे क्यों कोई बिहेव करेगा, ऐसे क्यों कोई एक्ट करेगा? Only people who are in a deeply negative state, who feel very bad indeed, would create such a reality as a reflection of how they feel. Now they are engaged in destroying nature and the planet that sustains them. Unbelievable but true. Humans are a dangerously insane and very sick species. That's not a judgment, it's a fact. It is also a fact that the sanity is there underneath the madness. Healing and redemption are available right now. You know, ये जो सब माइंड जो बहुत सारा माइंड आइडेंटिफाइड है, उसके वजह से इतनी इंसैनिटी है। बट द एक्चुअल सोल इज इज फुल ऑफ लव एंड देयर इज दैट सैनिटी अंडरनीथ द मैडनेस, जैसे ऑथर कह रहे हैं। So healing is available right now, that awareness, that consciousness, bringing out the light is available. We just need to keep, going back to it again and again. Keep coming back to the awareness, keep realizing and telling ourselves that this is not really
truly us, everything that's going around us, हमारे आसपास जो भी हो रहा है, that is not who we actually are. Coming back specifically to what you said, it is certainly true that when you accept your resentment, moodiness, anger, and so on, you are no longer forced to act them out blindly, and you are less likely to project them onto others. But I wonder if you're not deceiving yourself. When you have been practicing acceptance for a while, as you have, there comes a point when you need to go on to the next stage, where those negative emotions are not created anymore. तो ऑथर कह रहे हैं कि जब आप एक्सेप्ट करते हो कि ठीक है ये इमोशंस आ रहे हैं, ये इरिटेशन, ये गुस्सा, ये सब आ रहे हैं और यू आर जस्ट ऑब्जर्विंग देम. बट ऑथर कह रहे हैं कि आफ्टर अ व्हाइल यू नीड टू गो ऑन द नेक्स्ट स्टेज जहाँ पे वो नेगेटिव इमोशंस क्रिएट ही नहीं हो रहे हो, व्हेन दे आर नॉट गेटिंग क्रिएटेड. पहले तो हमें ऑब्जर्व करने कि ये इमोशंस आ रहे हैं, आई एम नॉट आइडेंटिफाइंग माई सेल्फ विद देम, आई एम जस्ट ऑब्जर्विंग देम. देन वी नीड टू स्टार्ट, धीरे धीरे हमें उस स्टेज पे आना है जहाँ वो इमोशंस आए ही नहीं. If you don't, your acceptance just becomes a mental label that allows your ego to continue to indulge in unhappiness and so strengthen its sense of separation from other people, your surroundings, your here and now. As you know, separation is the basis for the ego's sense of identity. True acceptance would transmute those feelings at once. And if you really knew deeply that everything is okay, as you put it, and which of course is true, then would you have those negative feelings in the first place? Without judgment, without resistance to what is, they would not arise. You have an idea in your mind that everything is okay, but deep down you don't really believe it. And so the old mental emotional patterns of resistance are still in place. That's what makes you feel bad. That's okay too. Are you defending your right to be unconscious, your right to suffer? Don't worry, nobody is going to take that away from you. Once you realize that a certain kind of food makes you sick, would you carry on eating that food and keep asserting that it is okay to be sick? मतलब जब हमें पता है कि ये सब patterns are not us, we are actually a soul underneath all of this, there is sanity underneath all of this. तो जब हमें इस बात की knowledge मिल गई है, जब हमें ये awareness है कि we are full of love, we are the light, we are the consciousness. तो फिर भी why go keep going into all those patterns? Wherever you are, be totally there. Be there totally. Can you give some examples of ordinary unconsciousness? See if you can catch yourself complaining in either speech or thought about a situation you find yourself in. What other people do or say, your surroundings, your life situation, even the weather. To complain is always non-acceptance of what is. तो हमें अपने आप को भी ऑब्जर्व करना है, ये सब स्टेजेस होते हैं ऑर्डिनरी अनकॉन्शियसनेस के, ये कंप्लेन, हमें ऑब्जर्व करना है. अब हम कितनी बार कंप्लेन करते हैं कि ये ऐसा हमारे हिसाब से क्यों नहीं है चीजें आसपास. तो दैट इज व्हेन वी स्टार्ट ऑब्जर्विंग. To complain is always non-acceptance of what is. It invariably carries an unconscious negative charge. When you complain, you make yourself into a victim.
When you speak out, you are in your power. So change the situation by taking action or by speaking out if necessary or possible. Leave the situation or accept it. All else is madness. तो, या तो uh, if you're able to speak it out, express yourself. Say whatever is not working for you. आप उसमें change ला सकते हैं तो लेके आइए. अगर नहीं, तो if you can't, then just accept it. या तो speak up, या तो bring in acceptance, or there is nothing else that you can do. There is no point in complaining. तो अपने आप को हमें ऐसे ऑब्जर्व करना है कि अगर हम कंप्लेन कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं. क्या है जो हम चेंज कर सकते हैं, क्या है जिसमें हमें और एक्सेप्टेंस लानी है अपने अंदर. Ordinary unconsciousness is always linked in some way with denial of the now. जब भी हम ऑब्जर्व करेंगे हमारे अंदर ये सब चीजें, तो इट इज समवेयर और द अदर बिकॉज वी आर नॉट एक्सेप्टिंग द प्रेजेंट मोमेंट. हमारे अंदर वो डिनायल है, वो रेजिस्टेंस है, एक्सेप्टेंस नहीं है. The now, of course, implies the here. Are you resisting your here and now? Some people would always rather be somewhere else. Their here is never good enough. Through self observation, find out if that is the case in your life. Wherever you are, be totally there. ये एक तो पहला पॉइंट जो ऑथर ने बताया इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कंप्लेन. और ये दूसरा पॉइंट ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि जहाँ अब हम हैं, जहाँ भी हम हैं, जिस भी सिचुएशन में जहाँ भी हम रहते हैं, क्या हमने इसको टोटली एक्सेप्ट किया है. ये क्वेश्चन अपने आप से पूछना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. बिकॉज देर इज ऑलवेज द ग्रास ऑलवेज लुक्स ग्रीनर ऑन द अदर साइड ना. हमें हमेशा ऐसे लगता है नहीं कि अगर हम कहीं और होते, या हम यहाँ से कहीं दूर चले जाते, हम कहीं और रहते, तो इट वुड बी मच बेटर. यहाँ पे ये सब कुछ चल रहा है. आई डोंट वांट टू बी इन ऑल ऑफ दिस सिचुएशंस. तो अपने आप को ऑब्जर्व करना इम्पोर्टेंट है इन सब चीजों में. तो ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स दिए हैं ऑथर ने हमें टू सी हाउ where we are unconscious, and where is the resistance. If you find your here and now intolerable and it makes you unhappy, you have three options. Remove yourself from the situation, change it, or accept it totally. This is also very important. Underline. अगर ऐसी कोई सिचुएशन है जो हमें लगता है ये हम नहीं टॉलरेट कर सकते, ये हम यहाँ नहीं रह सकते, या तो अगर हम वहां से निकल सकते हैं, इफ इट इज पॉसिबल, तो दैट इज वन ऑप्शन. और इफ वी कैन चेंज इट, दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन. और द थर्ड इज एक्सेप्टेंस. To just accept it as if you had chosen it. जैसे ऑथर ने पहले भी कहा है, इस बुक में एक्सप्लेन किया है, you accept it as if you had chosen it, completely accept it. If you want to take responsibility for your life, you must choose one of those three options, and you must choose now. Then accept the consequences. No excuses, no negativity, no psychic pollution. Keep your inner space clear. तो हर जो भी सिचुएशन है, सब अच्छे से सोच के, समझ कर, कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोच के कि अच्छा, अगर अगर मैंने ये स्टेप लिया टू चेंज, और टू रिमूव माई सेल्फ फ्रॉम दिस प्लेस, टू गो समवेयर एल्स, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे. ये सब सोच के अगर हम डिसीजन लेते हैं, उसके बाद देन there shouldn't be any excuses or negativity. Then our inner space has to be clear with whatever decision we make. तो ये मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगे ये दोनों पॉइंट्स. एक तो एक्सेप्टेंस ऑफ वेयर वी आर, व्हाट सिचुएशन वी आर इन. और फर्स्ट जो कंप्लेनिंग का ऑथर ने बताया. If you take any action, leaving or changing your situation, drop the negativity first, if at all possible.
ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर सिचुएशन ऐसी है, अगर कोई है जिसके साथ हम नहीं रहना चाहते, या कोई जॉब है जो हम नहीं करना चाहते, हम छोड़ना चाहते हैं, सबसे पहले हमें नेगेटिविटी ड्रॉप करनी है। जो भी नेगेटिव थॉट्स है, इमोशंस है, सिचुएशन को लेके, किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेके, वी हैव टू चेंज दैट, वी हैव टू ड्रॉप दैट नेगेटिविटी. Action arising out of insight into what is required is more effective than action arising out of negativity. जो actions हम लेते हैं because of the negativity inside us, that is not right. हमें बिल्कुल सोच समझ कर सब aspects को देख के decide करना है. Any action is often better than no action, especially if you have been stuck in an unhappy situation for a long time. If it is a mistake, at least you learn something, in which case it's no longer a mistake. अगर हम कुछ गलत भी करते हैं, we are learning. So that is not a mistake. एंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ऑथर कह रहे हैं, एनी एक्शन इज बेटर देन नो एक्शन. अगर बहुत टाइम से एक हमारे माइंड में कंटिन्यूअस नेगेटिविटी चल रही है, तो हमारे पास कौन से तीन ऑप्शंस ऑथर ने बोला? या तो हम चेंज करें, या तो हम उस सिचुएशन से बाहर निकल जाएं, वट एवर द सिचुएशन इज, और एक्सेप्ट इट. तो वी हैव टू टेक वन ऑफ दीज थ्री ऑप्शंस. If it is a mistake, at least you learn something, in which case it's no longer a mistake. If you remain stuck, you learn nothing. Is fear preventing you from taking action? Acknowledge the fear. Watch it. Take your attention into it. Be fully present with it. Doing so cuts the link between the fear and your thinking. Don't let the fear rise up into your mind. Use the power of the now. Fear cannot prevail against it. अब fear क्या है? क्योंकि हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि अगर हमने ये एक्शन लिया तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, लोग क्या कहेंगे, या कोई भी फैमिली मेंबर या जिससे भी हमें फेयर हो. तो all that is going into the future. तो उस टाइम पे we have to be in the present, not think about the future. Acknowledge the fear and bring our attention towards it. तो ये भी बहुत important है. If there is truly nothing that you can do to change your here and now, and you can't remove yourself from the situation, then accept your here and now totally by dropping all inner resistance. जब अगर कोई सिचुएशन ऐसी है जहाँ पता है हम नहीं चेंज कर सकते, हमने सब देख लिया है, वी नो वी कांट कम आउट ऑफ इट, दिस इज व्हाट इट इज. तो एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जो भी रेजिस्टेंस है उससे हमें बाहर निकलना है. फुली एक्सेप्टेंस क्रिएट करनी है. वी हैव टू बी fully present and accept without any resistance. The false, unhappy self that loves feeling miserable, resentful, or sorry for itself can then no longer survive. This is called surrender. Surrender is not weakness. There is great strength in it. Only a surrendered person has spiritual power. Through surrender, you will be free internally of the situation. You may then find that the situation changes without any effort on your part. In any case, you are free. You know, तो जब हमें पता है हम हम इसमें कुछ नहीं चेंज कर सकते, तो in that case, we have to bring in acceptance, and we have to remove all resistance. So what is surrender? This is what surrender is, when we fully accept the situation without any resistance. Okay, I think we'll stop here and then we'll continue tomorrow. Okay, so I'll just share the questions with you.
Give me a moment. Okay. So the questions for today are: do you agree with the author that we often defend our right to be unconscious and continue suffering? What, according to the author, is true acceptance of our emotions? तो क्या आप agree करते हैं कि हम unconscious रहते हैं और suffer करते रहते हैं? तो what is the true acceptance of our emotions? क्या हमने learn किया है? क्या है acceptance? Okay, according to the author, only a surrendered person has spiritual power. What do you feel about this? Do you agree or disagree? Can you share personal experience where surrendering has helped you transform your life? क्या तो आपका क्या ओपिनियन है सरेंडरिंग को लेके? क्या ऐसा कोई एक्सपीरियंस है जहाँ पे आपने सरेंडर किया और आपको बहुत हेल्प किया है अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में? So the third question is, the author has discussed in detail about past taking up a great deal of our attention. He has also implied that waiting is a state of our mind. Do you resonate with this? What steps can you take to awaken yourself into the present? तो पास्ट में सोचना बहुत ज्यादा हमारी अटेंशन को लेता है तो अ, वो आपको उसके बारे में आपको क्या लगता है आप क्या कर सकते हैं टू अवेकन योरसेल्फ इनटू द प्रेजेंट आप क्या स्टेप्स ले सकते हैं तो ये आज के 3 क्वेश्चंस हैं या आप व्हाट्सएप ग्रुप में रिप्लाई कर सकते हैं या अगर यूट्यूब पे हैं तो कमेंट सेक्शन में भी रिप्लाई कर सकते हैं सो थैंक यू सो मच we'll end this session today. Thanks for joining. See you all tomorrow.